Me to talk about my views on some of the aspects of BNN. I would not say I'll be able to complete or take you all a BNN completely, but I'll give you a gist of what I perceive about Bhrigu Nandi Nadi. So I have approximately 39 slides. May not be able to complete today. If not, let's see if we need to resume the same topic next week. But I'll try my best to complete the topic today. So let me share my screen. Vinayji, would you please allow me to? Yes. Okay. So this is the recent book which is about to be released on Amazon and Notion Press and other e-commerce platforms, maximum by Tuesday, Wednesday. Hopefully Monday will be released on Notion Press. So Monday as in tomorrow. So I'm trying my best to get that release on Notion Press at least. So and then on Tuesday, Wednesday, hopefully it should be available in Amazon India. So and later it'll be available in Europe and US also. So basically, as Vinayakji told, that this book is already been published in English in 2020. Now I've tried to give some more explanation in Hindi. So it is you can say that it's an edited version, but it's only catered to those people who are basically Hindi readers or who are not comfortable with English. So this basically catered to those people only. So, but yes, if anyone would like to have both the version, because little this book has a little more explanation, and however the crux will remain the same. So I'll explain also what is when I say DNA, and of course it is my opinion. So you may beg to differ, you may not have the same, I mean everyone would not have the same opinion. So it's just my view, basically what I believe when I say DNA. So I'll give you my opinion also. So this is the book cover, and I talk about the release date and what it entails. So basically it entails how to use SHUKRA. So basically when we learn astrology, we learn astrology based on what is the Rashi chart talks about, how we read the chart and how we time the event. But sometimes we need to take the help by making Chandra as a Lagna or maybe Surya as a Lagna. On top of that, of course, it's a research-based subject. Okay. If we can make Shukra as a Lagna also, so we can also try to dig down a little more deeper into the Jataka's life. So basically just a research of mine, and I'll tell you the difference when I say Venus, and maybe I'll be able to give you a little more explanation through mythology also, because my main forte is mythology. I never do Jyotish with based on calculation. I don't believe in, I mean, this is my opinion. I don't do more work towards astronomy. So my astrology is not based on mathematical based calculation. My astrology is based on truly spirituality, intuition, and mythology. So it is a combination of everything. In all of my books, here and there will combine each and every aspect. So I don't actually follow a Ganita Jyotish. So because it's a difficult for me, and I'm throughout my life I've been kind of I'm not a very, I would say not that very good in mathematics. So that may be the reason. But anyways, so let me go through and ask your opinion, what you guys think about what is Lakshmi.
So if anyone would like to take and give their opinion, what they think about what is Lakshmi. Can anyone would like to shed some light? What is Lakshmi? The prosperity. Mm-hmm. Wealth and love. Wealth तो आपने लिखा था कि is wealth Lakshmi destined. Prosperity, wealth, luxury, luxurious Okay. items, Okay, what else? Anyone? Prosperity related to any event in our life. The prosperity may be of wealth or maybe of body. हम लोग लक्ष्मी को 8 नामों से जानते हैं। अमृत लक्ष्मी नमः, सौभाग्य लक्ष्मी नमः, काम लक्ष्मी नमः, सत्य लक्ष्मी नमः, इत्यादि इत्यादि। जी 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 जी, सही कहा आपने। और कुछ? Sir, are you asking the literal meaning of Lakshmi, the Utpatti of Lakshmi, or general? Whatever is your view on Lakshmi. How would you take this word of Lakshmi in your life? I mean, how do you explain to other people? For you, what is Lakshmi? Lakshmi is positivity and progress. The 8 forms represent 8 different aspects of life, be it Rajya Lakshmi, Santana Lakshmi, Dhairya Lakshmi, Vijaya Lakshmi. So different aspects of prosperity in life and progress, positivity. Wonderful, yeah. And it is purity and auspiciousness. Yeah. Correct. Everything is you said, all of you guys are absolutely right. So basically, we all learn astrology to know about our chart, to help other people when they will, get Lakshmi or wealth. So basically, we primarily first believe that Lakshmi is only wealth. We believe that the materialistic world is Lakshmi, and the Lakshmi is only limited to wealth. So when I started learning astrology, I also used to think alike, and I used to believe that Lakshmi is only wealth, which we consider, money, hard cash, liquid cash, car, property, so everything, what we can enjoy in terms of pleasure, we used to think that it is Lakshmi. And other than that, I have no views how to basically go beyond and understand the different forms of Lakshmi. So you have said it right, that yes, Lakshmi can be in many forms, but do we literally believe that in the same view? Aren't we not stick to the thing that materialistic world or the cash, the liquid money is only Lakshmi? Are we happy with what we have, as in Santan Lakshmi, as in Dhanya Lakshmi, as in the knowledge we have, the Saraswati Lakshmi, as in the courage we have to do some good, good work in the society? Aren't we just only fixated towards the wealth, as in which we can, touch, and we feel that, okay, this is the only Lakshmi? Because when I read any chart and when the person comes to me for a consultation, of course, is it is a general phenomena. Anyone would go to astrologer, definitely he'll ask, when I'll have the Lakshmi, when I have the money. No one would ask generally, other things about the Lakshmi, the different forms of Lakshmi, whether it's Santan Lakshmi or Vidya Lakshmi or Dhanya Lakshmi. So if we literally think Lakshmi is only wealth, then we would not be able to understand the other realms of the Lakshmi. And I believe that whenever we used to understand the wealth combination in the chart, please
never ever assume that the physical form of something is only Lakshmi. Then we would not be able to understand the aspect of timing of Lakshmi. Or to better, I would say, I don't have the correct word, but I would say not be able to understand what is Lakshmi. So basically, when we time any event associated with Lakshmi, we need to understand that, okay, there are different forms of Lakshmi. So when we have blessing of a child in our, in our family, so it is a Santan Lakshmi. Okay, we should not undermine this. When we get any certificate, when we get any college degree, it is a Lakshmi. We should not undermine this. We should equally give importance that this Lakshmi, due to some of our good karma of my past life or my parents, and because of that, I attained that particular, position in society, or some kind of a name and fame in the society. Okay, because wealth does not necessarily give you name, fame. Sometimes when you do well, suppose in sports, so showing your parakram also, you get name and fame, right? In the same way, when you attain or do in a competitive exam, clear IAS or IPS exams or CA or a medical exam, so again it's a name and fame which you bring in to your family and to you, of course. So that is again a Lakshmi, which we generally undermine. So my second question is wealth or Lakshmi is predestined? This is my second question to all of you. आपको क्या लगता है कि वेल्थ पहले से ही प्रीडेस्टिन है? Partially. Yes, sir. Okay. सभी को लगता है? नहीं सर, predestined है, but we can change the situation through our karmas also. Okay. सर कौन से वेल्थ के बारे में बोल रहे हैं? कुछ भी, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें से कुछ भी। सर अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अगर पोटेंशियल है तो हम ग्रास रूट से भी ऊपर जा सकते हैं। ओके, ठीक है। मुझे क्या लगता है कि लक्ष्मी किसी भी फॉर्म में हो तो वो हमारे प्रारब्ध के कारण वो प्रीडेस्टिन होती है, यानी हमारे जो भाग्य में लिखा है वो प्रीडेस्टिन है, वो विधाता ने पहले से ही लिखा हुआ है, वो हमको मिलना है। दशा, अंतरदशा और गोचर उसी चीज को हमको मैनिफेस्ट कराती है हमारे जीवन में। हम जब कोई एग्जाम क्लियर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10th 11th 12th एंड तो हमको लक्ष्मी उस फॉर्म में कैसे मिलती है? सरस्वती विद्या के रूप में मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, फिर जॉब मिलती है तो अगेन पोजीशन मिलती है समाज में, रिस्पेक्ट मिलता है, नेम एंड फेम मिलता है, तो वो भी लक्ष्मी है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सैलरी हमको चेक मिलता है, अगेन वी मैनिफेस्ट दैट लक्ष्मी। फिर शादी हो जाती है तो फिर घर में एक और धन लक्ष्मी का आना होता है ना। जब शादी हो जाती है तो जो स्पाउस है वो धन लक्ष्मी है। शादी के बाद जब संतान होती है तो वो संतान लक्ष्मी है, राइट। तो लक्ष्मी जी किसी ना किसी फॉर्म में वो हमको एक डेजिग्नेटेड समय पर ही हमको मिलती है, जो हमको प्रारब्ध में लिखा है। अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो एजुकेशन भी नहीं मिलेगी। अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है तो शादी भी होना मुश्किल हो जाता है, शादी भी नहीं होती है। तो जब शादी नहीं होगी तो ऑफकोर्स संतान भी नहीं होगी। कई बार एजुकेशन अच्छी नहीं होती तो जॉब भी नहीं लगती है ना। सर अगर आप स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कोई भी संत नहीं मानता कि सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है। वो तो हमेशा कहते हैं कि नहीं, यू कैन अचीव। ओके जी, मैं भी यही बोल रहा हूँ। अभी हमने पूरा तो लेक्चर किया ही नहीं है, अभी हमने जस्ट ये डिस्कस किया है कि चीजें प्रीडेस्टिन्ड होती है। मैंने अभी तक सिर्फ ये बोला है कि चीजें प्रीडेस्टिन्ड होती हैं, और अगर संत कहते हैं कि हम चेंज कर सकते हैं तो वो सही कहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं कहते। अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं आपको।
जब बिल गेट्स का जन्म हुआ होगा तो उस समय बिल गेट्स के समय पर उसी हॉस्पिटल में और भी बच्चे हुए होंगे, है ना, सेम उसी समय पे मान लीजिए आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए। तो बिल गेट्स को जो वेल्थ मिली, ठीक, और उसके जो समकालीन जो और बच्चे थे, तो वो कोई क्लर्क लगा होगा, कोई एक जनरल एक नॉर्मल ऑफिसर लगा होगा, कोई गवर्नमेंट जॉब में जॉब लगी हुई, कुछ किसी ने बिजनेस किया होगा। तो देख रहे हैं आप वेल्थ का जो मैग्नीट्यूड है सबके पास अलग अलग है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका जन्म सेम समय, सेम दिन, सेम सिटी, सेम हॉस्पिटल में हुआ है। बस जरा सा रूम का फर्क हुआ होगा, आगे पीछे कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई सेकंड थर्ड फ्लोर पे हुआ होगा, ठीक, मगर सबके पास मैग्नीट्यूड अलग अलग है वेल्थ का। क्यों अलग अलग है, कोई बता सकता है? प्रारब्ध कर्म के अनुसार सर, क्रियामान अगर में तो कितना भी कर सकते हैं, प्रारब्ध में जो हमने किया है उसके हिसाब से ही हमको मिलेगा ना इस जन्म में। प्रारब्ध वहां पे कार्य कर जाता है। ओके, ये सही है, कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड लेके पैदा हुआ है। करेक्ट। तो अगर किसी के सर पिछले जन्म फैमिली मेंबर हम्म, की हॉरोस्कोप भी अलाइन करता है ऐसी सिचुएशन में, अगर वाइफ, बच्चे, फादर, मदर 5 या 6 लोग हैं, वो एक दूसरे को कैसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं? मे बी जी, सबकी कुंडली साथ में ही काम करती है। किसी एक की कुंडली पे हमारा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी कुंडली है तो उसमें मेरा अधिकार है। तो ये पहली बात तो सोचना ही गलत होता है ज्योतिष में कि मैं बोलूं कि ये मेरी कुंडली है, नहीं, वो पूरी फैमिली की कुंडली है। जो आपके फादर की कुंडली है उस पर भी आपका उतना ही अधिकार है जितना उनका है। आप समझ रहे हैं? तो बिल गेट्स को इतना धन इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उनके माता पिता ने, उनकी फैमिली ने, हो सकता है बहुत अच्छे कार्य किए हो, सोसाइटी के लिए बहुत किया हो, बहुत दानी रहे हो, तो जितना दान किया उसको उनको इंटरेस्ट लगते इस जन्म में मिल रहा है प्रारब्ध के रूप में। जिसने एक गाय का दान किया उसको उतना मिला, जिसने 100 गायों का किया उसको उससे ज्यादा मिला, ठीक। जिसने एक नेत्रहीन इंसान की सेवा करी, किसी ने हो सकता है पूरे जीवन भर 100 नेत्रहीनों की सेवा करी, किसी ने एक स्ट्रीट डॉग की सेवा करी तो किसी ने 10 की करी, किसी ने 100 की करी, किसी ने बिल्कुल भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, और किसी ने अपनी भी करी, दूसरों की भी करी। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो प्रारब्ध में, आप प्रारब्ध चेंज नहीं कर सकते। ये अटल सत्य है। क्योंकि मतलब वैसे तो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, फिर वो कर्मा वर्सेस डेस्टिनी में वाला हो जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। इस कलयुग में हमारे लिए सावित्री बनना मुश्किल है। कौशिकी का आपने नाम नहीं सुना होगा, हमारे लिए कौशिकी बनना मुश्किल है, ठीक है। हमारे लिए मार्कंडेय ऋषि बनना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ही जो भाग्य में लिखा था वो चेंज करवा दिया था यमराज से भी। परफेक्ट सर, है परफेक्ट ना? सर। तो क्या हम हैं वो? हम मतलब आपको लगता है कि हम सावित्री जैसे हैं? क्या लगता है हम कौशिकी जैसे हैं? कौशिकी को मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था कि आपके पति की मृत्यु हो जाएगी जैसे ही सूर्य उदय होगा, ठीक। और वो उल्टा श्राप दे देती हैं, वो ये बोल देती हैं कि सूर्य निकलेगा ही नहीं, वो ये श्राप दे देते हैं तो मेरे पति का जो है देहांत भी नहीं होगा। तो वो उस समय की श्राप और ब्लेसिंग भी इसलिए चलती थी कि वो उतना उनमें तप भी होता था, उतना उनने ऐसे कार्य किए होते थे कि उनको पता था कि हमारे तप में इतना दम है, अगर किसी को आशीर्वाद दे देंगे तो उसका जो प्रारब्ध है वो कट जाएगा, वो मिट जाएगा, करेक्ट। तो इस जन्म में ना तो ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है और ना इस जन्म में हमको ऐसा बनना मुश्किल है। प्रयास करने में तो कुछ हर्ज होता नहीं। तो बेसिकली प्रारब्ध हम कभी चेंज नहीं कर सकते, हम प्रारब्ध का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है उपाय काम करते हैं नहीं, तो उपाय काम करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपको सामने अभी वो मैनिफेस्ट हो जाए। उपाय अगले दिन भी रिजल्ट दिख सकता है, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, और 100 साल बाद भी, और 10 जन्म बाद भी उपाय काम करेगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। आप सृष्टि को कुछ देंगे तो सृष्टि आपको वापस इंटरेस्ट के साथ देगी। कर्म की फिलॉसफी यही है। कर्म अलग अलग तरीकों से पढ़ोगे ना, किसी भी तरीके से, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में और क्वांटम फिजिक्स में, किसी भी पढ़ोगे तो जो कर्म है वो आपका किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं होगा, वो काम करता है, ठीक। तो
तो लक्ष्मी जी प्रीडेस्टिन है, जब समय आएगा तभी मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। ओके, तो क्योंकि जैसे आज हमारा जो लेक्चर है वो अष्टलक्ष्मी पे है, ओके, तो अष्टलक्ष्मी सभी को पता है, जैसे शुरुआत में लेक्चर में इसने बताया कि उनके 8 रूप है, अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट होती हैं, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, है ना, संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी के रूप में ये मैनिफेस्ट होती हैं जीवन में। जिसके जीवन में जो लगता है मेरे जीवन में है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला है, लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली भी जाती है। तो ये भी आप याद रखिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वो जो सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। मतलब क्योंकि शुक्र के बारे में आप चाहे भृगु नंदी नाड़ी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी और शाखा ज्योतिष की, तो शुक्र है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, वो तो वैसी ही रहेंगी, तो चंचला है, करेक्ट। तो लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं और उन 8 रूपों को हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। अब 8 जो इनके फॉर्म है सभी को पता है, विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और गज लक्ष्मी। ठीक, सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो लक्ष्मी जी जो है ये जो भृगु ऋषि हैं उनकी ये पुत्री हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने जो डीएनए वर्ड यूज किया, मैंने वो डीएनए वर्ड इसलिए यूज किया कि कोई भी चीज आपके पास या किसी के कुल में, जब हम कुल की बात करते हैं तो वो डीएनए में वो कैसे ट्रेवल होता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, वो ट्रेवल होके ही एक फैमिली से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जाता है। तो भृगु कुल में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था ख्याति। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनका वर्णन है, तो आप ये मत सोचिए कि सर हमने तो ये पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था, सब कुछ राइट है, गलत तो कुछ भी नहीं है। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग वर्णन है। देवी पुराण पढ़ोगे तो सृष्टि की उत्पत्ति कुछ अलग तरीके से बताइए, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो सृष्टि की उत्पत्ति कुछ अलग तरीके से बताइए। ऐसे ही जब शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें सृष्टि की उत्पत्ति कुछ अलग तरीके से बताइए। ठीक है, तो कोई भी चीज गलत नहीं होती, सब ठीक है, इट्स ओके। रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। अब एक बात और कि देखिए, जैसे शुक्र और शुक्राणु, ठीक है, जैसे मैंने बोला, और विनायक जी ने शुरू में पूछा कि वाई आई एम गिविंग द नेम एज अ डीएनए, क्योंकि शुक्र जो वर्ड है और शुक्राणु आप देखोगे तो वो कुल, किसी के परिवार के कुल और परिवार और वंश को वो दिखाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको डीएनए बोल रहे हैं। ठीक है, शुक्र धन या लक्ष्मी के उन 8 फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र को हम भृगु से जोड़ के देखते हैं, भृगु ऋषि की वंशावली से जोड़ के देखते हैं। जैसे मैंने बताया, परिवार, जनरेशन ऑन जनरेशन, हम जो हम शुक्र को शुक्राणु से जोड़ के देख रहे हैं, तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं कि इस, कि आपने माता पिता ने कुछ ऐसा किया होगा, आपके दादा ने, आपके परदादा ने कुछ कुछ उतनी पीढ़ियों पहले कुछ ऐसा किया होगा, तो उसका आपको फल मिलता है किसी भी रूप में। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। Hi sir, can we do this in English also? Sure. Okay. Sure. अच्छा, ये दोनों प्रेजेंटेशन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में है? Yeah, I will now, whatever I'll talk in English, I'll try and reiterate in Hindi also. Okay. So first I'll talk in Hindi and then I'll translate that in English. Okay. तो देखो कि ना, बाय डिफॉल्ट जब हम बात करते हैं ना गॉडेस ऑफ वेल्थ की, जब हम बात करते हैं, यानी जब हम बात करते हैं लक्ष्मी जी की बात करते हैं, तो लक्ष्मी जी को पाने के लिए विष्णु जी ने भी हर बार, हर युग में कुछ ना कुछ उन्होंने संघर्ष किया है। हर युग में, मतलब हर, आप कोई भी युग उठा लो तो उन्होंने कुछ ना कुछ संघर्ष किया है। तो जब हम बात करते हैं उस समय काल की, जब
देवताओं में ये डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये पता करो त्रिगुणातीत कौन है, यानी सबसे उच्च कोटि के देव या भगवान कौन है, जो तीनों गुणों से परे हो। त्रिगुण मतलब तीनों, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों से परे हो, सतत्व और तमस और रजस, इन तीनों गुणों से परे हो। सो once what happened, there was a discussion amongst all the devatas, and they wanted to basically they wanted to confirm who is the best among Trinity, Brahma, Vishnu, Mahesh. So the task was given to Bhrigu Rishi. So Bhrigu Rishi, basically this is a long story, so I'll not talk about when he reaches to Shiv and reaches to Brahma what happens, but I'll talk about when Bhrigu Rishi went to Vaikuntha Lok, where Vishnu and Lakshmi ji was sitting. So basically Vishnu ji kind of ignored the presence of or arrival of Bhrigu Rishi. So Bhrigu Rishi felt that, you know, he was insulted. So in a fit of rage, he basically kicked on his chest. तो जब उन्होंने उनकी चेस्ट पे किक किया तो भगवान विष्णु निद्रा में थे और वो जागे, और उन्होंने भृगु ऋषि के पांव को पकड़ा और बोला कि प्रभु कहीं आपको चोट तो नहीं लगी आपके पैर पे, क्योंकि मेरा जो शरीर है वो पाषाण का है। तो what happened when he kicked on the chest of Lord Vishnu? So Vishnu ji, you know, awake, and he said that maybe I might have injured your feet because my entire body is of, you know, stone, and I might have injured you. So then Bhrigu Rishi felt a little, I would say, I mean, his compassion arose, and he thought he did something wrong, because he is the God, he is the God, supreme God, and he's not taken it personally, and he's rather cool and subdued. So he then declared that he is the Trigunaditi. But the end result, what happened? Lakshmi ji got felt insulted. She said that because in your heart I reside, and how come you can insult me indirectly? So she basically left Vaikuntha and came down to Bhulok. So लक्ष्मी जी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सो होता क्या है कि जब लक्ष्मी जी देखती हैं कि भाई उनके जो पति हैं उनको उनकी चेस्ट पे किक मारी जहां वो खुद रहती हैं, तो लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो उनको छोड़कर चली जाती है और भूलोक में आ जाती है। तो अगर आप समझें तो लक्ष्मी जी का, चाहे हम बोलें चंचला रूप बोलें, चाहे हम ये बोलें कि भृगु कुल में ही भृगु ऋषि की वो पुत्री होने के बावजूद भी वो अपने पिता से नाराज थी और उन्होंने श्राप भी दिया भृगु ऋषि को। लक्ष्मी जी बेसिकली कर्स भृगु ऋषि, डिस्पाइट द फैक्ट आई एम योर डॉटर, so I curse you that from now onwards all I do not mean to hurt anyone, I'm just telling whatever there is in the story. So basically what she said that all the brahmanas, okay, who basically do all the karam kand wala jo activity hai, so they will basically survive on the by asking money or by taking alms, यानी भिक्षा मांगकर अपना वो जीवन यापन करेंगे। तो ये उन्होंने श्राप दिया था भृगु ऋषि को। तो कहीं ना कहीं आप इससे क्या सीख सकते हो कि लक्ष्मी जी को पाना इतना आसान नहीं है, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाती हैं वो, बहुत ही जल्दी। तो बेसिकली लक्ष्मी जी अपने आप में मैं अगर बोलूं तो लक्ष्मी जी की जो दोनों साइन है ना कालपुरुष कुंडली में, वृषभ और लिब्रा, ये दोनों कर्ज साइन है। बेसिकली दोनों के दोनों ही साइन कर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अपने आप में कालपुरुष कुंडली में ये कोई बहुत अच्छी चीज हमेशा देंगे, बट इट इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट इज अ कर्ज साइन। तो जब कुछ डिफरेंट हम सब्जेक्ट या कुछ और पढ़ते हैं तो जब मेरे डिफरेंट कोर्सेज उसमें बताता हूँ कि वृषभ क्यों राशि कर्ज है, लिब्रा क्यों है, बट इतना मैं बता सकता हूँ कि दोनों की दोनों
ये जो राशियां हैं ये कर्ज्ड है, ओके। और अभी यहाँ तक if you have any question, do let me know, and then otherwise I'll move forward. Sir, if I'm allowed, I'll just like to add one more thing there to the story. This is the Bhrigu and Vishnu and Lakshmi coming to Earth because of the insult. This is the background story for Tirupati, the Lord Balaji. And also it is known that Lord Balaji, whatever money he is collecting, I think that temple is the highest earning temple in the world. And whatever money he is earning is the interest money, they say. So I'm not sure how it is connected, but just wanted to mention this. Okay, yeah, it's all right. You basically connected the dot. So basically this story doesn't get over here. So what happens when she reaches to Bhulok? So all the Brahma, Vishnu, Mahesh, they start their hunt to look for Lakshmi ji. So what happened? Everyone, including Brahma ji also and Mahesh also, they came down to earth and they look for Lakshmi ji, and Lakshmi ji basically goes to, there was a king called Raja Chol. तो राजा चोल के यहाँ पे वो जाती हैं, और वहां पे जहां तक मुझे याद है, if I remember correctly, she takes the form of a cow. So that is the reason why जो गाय की सेवा बताई जाती है शुक्र को अच्छा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं it is also synonymous with serving cow also. तो वहां पे वो cow का form लेती हैं, and then Vishnu ji searches for his wife here and there, and then he gets fainted. So basically there is a story, and when Raja Chol take this cow, so he was expecting that she will give milk, the cow will give milk, but she doesn't. And then every day he notices that she goes somewhere, and after that she basically doesn't give milk, and then Raja Chol asks everyone to just follow that cow where she goes, and then there is a place where Vishnu ji is lying, and then he is fainted and he is still not recovered. So that same cow reaches over there and give milk to Vishnu ji. So, and there Raja Chol was very unhappy with this act of cow, and then he basically injured lying Vishnu ji, and he does not realize that he himself, Vishnu ji is lying, so he injured. And then Brahma ji cursed Raja Chol that he will become demon right now, and in the next birth you will become a king. I forgot the name, and he said that a Padmavati will born in your family. And Padmavati is not, no one is except Lakshmi ji. So story it's like that, and then Vishnu ji will again will come again in the form of I forgot the name of the deity, Venkatpati, and then he married to Padmavati, Venkateshwara. Then he takes loan from KUBER to get married with Padmavati, and then the loan was so heavy. Then he said that I'll keep repaying your loan or loan interest in Kali Yuga also. So basically that's the reason why people go over there, and they do a lot of donation, which is in South Tirumala. So yeah, that's the complete story. So there is one more story associated with goddess Lakshmi, and the reason is to tell you all this, that you simply do not understand astrology just by looking at the Shukra or Venus in the chart. Try and understand the deeper meaning. Why, if someone doesn't have Lakshmi, there could be a different reason. So that is the reason why this is the first thing I always do before beginning of any of my chapter in any of my course. So there is a story behind of emerging Lakshmi ji from churning of the ocean. So once what happens, Durvasa Rishi was basically roaming around, and then he met Indra, who was sitting
on his mount Aravat elephant, and Durvasa Rishi gave him one garland, but Indra take that garland, and he feels that it's a very petty gift. So basically, he gives it to his Aravat elephant, and then he basically what he does, he runs over on the garland, and he disrespect that. And Durvasa Rishi became so aggravated and angry that he cursed him that you will be devoid of your Shri. In your Indralok, you will be devoid of your Shri. Shri means Lakshmi. And then immediately Lakshmi ji got vanished from Vaikuntha. And then everyone reaches to Lord Vishnu and Brahma and Shiva that what they should do right now, because there is no Shri in Vaikuntha. So everyone suggested that let's do one thing. Let's do a Samudra Manthan. So basically this happens with the help of Brihaspati and Guru Shukracharya. So Brihaspati ji meets Shukracharya, and then Shukracharya convince Raja Bali and all that we have to do Samudra Manthan, means churning, and then there will be some kind of precious items will emerge from ocean, and then we will divide amongst us. So that's how the churning of ocean happens. So that was the reasoning of the churning of the ocean. And then on one end there is a Devata, on another end there is a Daitya. So Mandar Parvat was cut from the Sudarshan Chakra of Lord Vishnu, and then Garud, who brings that Mandar Parvat, and Lord Vishnu takes the form of Kurm. So that's how a Vasuki Nag becomes a rope. So there is a lot of you see teamwork there between Daitya and Devatas. And so it teaches there is a sangharsh between negative and positive. So if you want to bring about Lakshmi in your life, you have to do a sangharsh. Basically, you have to do a churning of the ocean, means chintan, and that sangharsh will entail always a negative, I would say, negative aspect of life. Could be anything. So without negative, you cannot bring about Lakshmi ji in your life. So don't take me literally, but this story teaches that if you have to do a little bit battle in your life, which you call it as a sangharsh, it is not that something we should refrain from. So because it's a kind of a churning in our life, we have to do. So it's a long story. Everyone knows what happened after churning of the ocean, how Amrita, the nectar comes out, and how they divide, and how Mohini avatar of Lord Vishnu distribute, and Rahu Ketu story. Everyone knows about it. There is one more story of Goddess Lakshmi. Anyone has any idea about this? Lakshmi and Saraswati. Can anyone tell me without reading it? Anyone? Okay, I tell you. Once what happens, Lakshmi ji once meets Saraswati, goddess Saraswati, and they started normal casual discussion like any other normal two friends. So Lakshmi ji, out of sheer context, from nowhere, she tells that I am Lakshmi who
basically takes care of the entire cosmos in the form of treasures, wealth, resources. So after listening that, Saraswati did not like this, and she tells that, you are chanchala, and वो बोलती है उनको कि आप पल में तुष्टा हो और पल में रुष्टा हो, एक पल में बहुत जल्दी मान जाती हो और एक पल में दूसरी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हो। तो अभी किसी की लॉटरी लगी, दूसरे पल में पता चला कि बेसिकली जो आपके अकाउंट में पैसा है वो आपके लिए था ही नहीं, वो किसी और के में जाना था। तो उनका साथ कुछ ऐसा, जैसे कोई गैम्बलिंग वाली टेबल पे बैठा है, अभी 1 लाख रुपीस जीता, उन्होंने लगा मैं एक बेट और खेलता हूँ, तो उसमें वो उससे ज्यादा हार गया। वो बोलती है कि यू आर बेसिकली चंचला, यू आर नॉट फिक्स्ड, you keep on moving. However, I am being Goddess Saraswati. I give a guarantee that no one can steal me. I'll always remain with everyone. But in your case, anyone can steal you. And there was a huge debate that turns out to be a very ugly conversation. And both of them decide, let's go and meet Lord Vishnu himself and ask him who is greater amongst between us. So there, Goddess Ganga was already there, and the same discussion, the same question, both of them asked from Lord Vishnu, and then Vishnu ji was didn't even get a single second to reply. Somewhere Goddess Ganga jumps into the conversation, and she takes a side of Goddess Lakshmi. So, and all three of them curse each other. And then Saraswati became so aggravated and angry, and then she cursed Goddess Lakshmi that you will go to Bhulok, means you will go to earth, and or in a Mrityu Loka, and then you will be born as Tulsi. And Goddess Lakshmi again, in return, she cursed Saraswati that you will, also come down to earth. And in between, as Ganga also, Goddess Ganga was also taking a participation. So she was also cursed by Saraswati that you will also come down to earth. So one day, someday you will come. Okay. Do you know this? The deeper meaning of this conversation? This conversation turns out to be very ugly, that each one of them curse each other. And it is written already by Brahma, Vishnu, Mahesh that something like that will happen. Ganga, she will have to go to Bhulok. Why? Because there will be 60,000 sons of Sagar. Sagar means ancestor of Lord Rama. And these 60,000 sons will be cursed by Kapil Muni. And the only moksha, the only way of getting moksha, by when Bhagirath, will do his penance to bring Ganga ji from Brahmalok to Bhulok. So it means it is already predestined. This something like that will happen. And this is all Maya was conspired by Brahma, Vishnu, Mahesh. So they knew something like that will happen. And they are basically trying to, I would say, वो कहते हैं ना कृष्ण भगवान की कर्ता भी मैं कारण भी मैं, तो वो उस सिचुएशन को बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सगर पुत्र जब होंगे 60,000 और वो डिसरिस्पेक्ट करेंगे कपिल मुनि की, तो वो उनको कर्ज करेंगे, तो उन 60,000 वो जो बच्चे, मतलब वो जो उनके पुत्र हैं,
उनको मोक्ष पाने का जो तरीका है वो सिर्फ गंगा जी को लाके होगा। तो उससे वो कैसे आएंगी? तो उनको क्यों ना हम कर्ज दिलवा दे किसी के थ्रू। समझ रहे हैं आप? तो अगेन इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डीएनए। वो डीएनए किसका? लॉर्ड राम, इक्ष्वाकु वंश। यानी इक्ष्वाकु वंश में पहले से ही कर्स है। समझ रहे हैं आप? कपिल मुनि का कर्स है पहले से ही। तो जो गंगा जी को लेके आए वो पृथ्वी पे, ऑफ कोर्स इक्ष्वाकु वंश मीन्स सूर्यवंशी, लाइक Anshuman, Dilip, and then Bhagirath, but there is always associated as some form of a curse. कर्स नहीं होता, कर्स नहीं होता तो भगवान राम का आना नहीं होता। वो पहले से डेस्टिन था और उनको लाने के लिए एक प्रयोजन चाहिए था। तो प्रयोजन क्या था? वो ये वाली स्टोरी थी। और इस स्टोरी को क्यों करा गया? Do you know why this story happened? Because there is already a one curse associated with Sankadik Rishi. The four kids who cursed Jai Vijay, who were basically Dwarpal of Lord Vishnu, that you will be born in 3 yugas as a demon, and the only person will give you a moksha is a Lord Vishnu himself in different avatar. Like in Satyug, he was born as Narsingh, and then in Treta Yug, in Treta Yug, he'll be born as Lord Ram, and in Dwapar Yug, Lord Krishna. Okay, so एक कर्ज को पूरा करने के लिए भगवान को ये सब करना पड़ा, क्योंकि वो कर्ज ही ऐसा था ना वो, क्योंकि जय विजय को मुक्ति चाहिए थी और 3 जन्म के बाद उनको वापस वैकुंठ आना था, उनको वापस द्वारपाल बनना था। Am I making sense? I'm just out of breath. Anyone would like to ask anything? No question? Okay. So, ये आप जान लीजिए कि जीवन में जो भी घटित होता है, अगर आप अपने कैमरे को स्विच ऑफ करके भी बैठे या ऑन करके बैठे तो इट इज ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड। आप इस लेक्चर में, इट इज ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड। सब कुछ पहले से तय है। हम बोले हम कर रहे हैं तो हम किसी भ्रम में जी रहे हैं। इट्स जस्ट एन इल्यूजन। हम सोचें हम कर्म का पार्ट ही नहीं बनेंगे तो वो सोचना भी इट्स अ पार्ट ऑफ माया ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर हमको अपने पे घमंड हो जाए, हम सोचें कि मैं कर्म कुछ करना ही नहीं, मुझे, मैं घर में अपने आप को डोर में लॉक करके बैठ जाता हूँ, अगेन वो भी कर्म है, तो वो भी आपके द्वारा निर्धारित नहीं हुआ, वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ये फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है बेसिकली। तो एंड दैट्स हाउ लक्ष्मी जी born as Tulsi in Prithvilok to a king called Dharamdwaja. And then again there is one more story which will come in the next slide. Because we are talking about Lakshmi ji, so Lakshmi ji has taken birth in different yugas in different form. So what happens once Ganesh ji was doing tapasya? So Tulsi ji came over there and she kind of started having some infatuation towards Lord Ganesha, and then she basically proposes him. So Ganesh ji did not like this and he cursed Tulsi. Ganesh ji cursed Tulsi that she will marry to Rakshas, and that Rakshas name was basically Shankachur. So Shankachur was actually avatar of Lord Vishnu, and basically it is said that is a Vishnu avatar, but it is basically
Can someone tell me who was that guy who took a birth as Shankhachud? What was his previous life? What was that guy name? And what was the curse? Sudama. Yeah. Come again. I think someone said something. So I think someone said Sudama. So in Golok, Shri Rama was cursed by Radha. Shri Rama was cursed by Radha, and then Shri Rama took this janm, next janm, as a Shankhachud. So Vishnu ji kind of has a blessing on his friend, so that is the reason why it is said that is avatar of Vishnu. Okay, and when Tulsi ji basically surrender to Ganesh ji, and she said that she did it by mistake and she wants to apologize, and then Lord Ganesha said that okay, I'll try and convert that curse into a blessing. Then he said that you will be basically a kind of a plant which will be used in medical you can say medical science or Ayurveda. So that's how this curse was converted into a blessing, basically, for people like us. And there is, another story of Vrinda, okay, and Jalandhar. So there is one more story also there. So, but again, it's not that relevant. We can skip that. So now, let me tell you one thing. Because everyone has the fascination or fondness for Lakshmi ji, primarily because of sheer money. So I would like to tell you that, Shukra can be of different kind. Like one Shukra can be literally Shukracharya. Okay. And one could be Kuber. And one could be Goddess Lakshmi herself. So let me tell you one thing. Once what happens, शुक्राचार्य जो गुरु हैं दैत्यों के, वो भगवान विष्णु की सभा में जाते हैं. And then there was a lot of people around there, Surya Dev and Brahaspati Dev, Chandra Dev, Brahma ji himself and Shiva. There was a sabha basically, and then Shukracharya went over there in Vaikunth, and he wanted to say that whenever or since today, whoever on Bhulok does yajna, he said that some portion of the yajna, bhag, will be given to Daityas. All the Daitya. Means some portion. But Vishnuji says that, he said that, it's wrong because they will misuse it. And you are unnecessarily taking a side of Daitya. So basically, I would not pass this kind of, judgment or give any provision for this. But there was a huge debate. And then Vishnuji cursed him. शुक्राचार्य को उन्होंने कर्ज किया. उन्होंने बोला कि आपका एक रूप जिसमें लस्ट है, जिसके अंदर भोग है, ठीक है, वो रूप भूलोक में जाएगा और दैत्यों को सर्व करेगा. तो आप शुक्राचार्य हो तो प्रॉपर शुक्राचार्य के रूप में जाओ, उन्हीं को सर्व करो, क्योंकि आपने बहुत अच्छे कार्य भी किए, आपके पास संजीवनी विद्या भी है. तो आपका एक रूप ब्रह्मांड में शुक्र चमकेगा, मतलब एक सितारे की तरह, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वीनस. तो हम ऐसे डिफरेंशिएट वी कैन डू इट. अगर
चार्ट में एनर्जी शुक्राचार्य वाली है, तो ऑफ कोर्स पर्सन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स मोर भोग, माया, ओके, फिल्ड विद लस्ट। अगर वो अच्छा होगा तो विल बी कंसिडर्ड एज वीनस, shining star, devoid of any lust, devoid of maya, all these negative traits. So शुक्र को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो वीनस है चार्ट में, या वो शुक्राचार्य वाला मतलब धन देने वाला शुक्राचार्य है, या वो वाला धन है जो सात्विक है, जो गॉडेस लक्ष्मी से एसोसिएटेड है, या वो वाला धन है जो तामसिक है, जो शुक्राचार्य से जुड़ा हो सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स एक कुबेर वाला भी है, तो कुबेर अगेन, कुबेर का जो धन है वो बेसिकली आप उसको एसोसिएट, उसको भी डिवाइड कर सकते हो। मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा भाई, नेक्स्ट में मैं बताता हूँ उसको कैसे हाउ वी कैन बाइफरकेट। ओके, तो आई थिंक ये स्टोरी सभी को पता है, वामन अवतार वाली और विष्णु जी की। सो बेसिकली व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो दिस स्टोरी, बिकॉज अगेन जो यहाँ पे शुक्र और जो हम बात कर रहे हैं वो शुक्राचार्य, जो गुरु है शुक्राचार्य, उनकी यहाँ पे को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिछली स्टोरियों में हमने गॉडेस लक्ष्मी के बारे में जाना, अब अचानक से हम शुक्राचार्य पे आ गए। तो एक स्टोरी मैंने बताई कर्स वाली, जो ब्रह्मा मतलब विष्णु जी ने उनको कर्स किया, एंड देयर इज अनदर स्टोरी ऑफ वामन अवतार जो कि associated Bali doing 100 yagya, and then Vaman avatar comes over there and asks for 3 feet land from him, and then where the Shukracharya denies and tells his disciple Bali that this person who came here as in the form of dwarf Vaman avatar, he himself is a Lord Vishnu, so don't give him anything. So you guys know this story. So